Namaskar. Good evening, viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. As on the first 2 days, the third day of the monsoon session, too witnessed sloganeering and disruptions from the opposition benches. In this program, we look at the highlights of Monday's proceedings. I'm your host, Rajiv Kumar Singh. Let us first take a look at the headlines. Both houses of parliament adjourned for the day following disruption. Government accuses opposition of running away from discussion on Manipur issue. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh suspended from Rajya Sabha for the entire monsoon session. Leader of the House, Piyush Goyal, moves motion, seeks suspension for remainder of session for unruly conduct. 3 bills introduced in the Lok Sabha. Health Minister Dr. Mansukh Mandviya introduces National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 and National Dental Commission Bill 2023. The Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill 2023 also introduced. Let us begin with the proceedings in the upper house. Aam Aadmi Party member Sanjay Singh was suspended from Rajya Sabha for the remaining part of the monsoon session for repeatedly flouting the rules of the Council of States. Leader of the House, Piyush Goyal, moved a motion seeking the suspension of Sanjay Singh for the remainder of the session for unruly conduct. He stressed that the member defied the etiquettes, conduct, customs and procedures of the House. Chairman Jagdeep Dhankar then put the motion to vote and it was adopted. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar noted on Monday that on July 20th, he had given a ruling that notices for short duration discussion received regarding violence in Manipur is admitted and the leader of the House, Piyush Goyal, had agreed to a discussion on the issue. You would recall, on 20th July 2023, I had already given a ruling that the notices for short duration discussion received regarding the violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Shri Piyush Goyal, had agreed for a discussion on this issue. The remaining notices are under my active consideration. Chairman Dhankar announced that he had received several notices under Rule 176 for discussion on instances of violence and atrocities against women in several opposition-ruled states. This included notices raising concern over violence during panchayat elections in West Bengal. Honorable members, 11 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. Dr. Sudhanshu Trivedi, BJP, concern over violence during panchayat elections in the state of West Bengal. Shri Sushil Kumar Modi, the same. Shri Sushil Kumar Modi, concern over brutal use of police force against peaceful protesters in Patna, Bihar. Dr. Lakshmikant Vajpayee, BJP, concern over atrocities against women in the state of Telangana. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar conducted the question hour amid din. Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat answered the questions pertaining to his ministry. सर, हमारी सरकार सबको नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। ये कार्यक्रम 4
पांच प्रदेशों में नहीं हो रहा है। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड में 50% से कम हुआ है अभी तक। ये क्या कारण है कि यहाँ इन राज्यों में जल से जल पहुंचाने का काम क्यों नहीं हो पा रहा? ये सही है कि जिन प्रदेशों के नाम का उल्लेख इन्होंने किया है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में देश की जिस गति से पूरे देश में औसत गति से काम हो रहा है, उस गति से कहीं ये प्रदेश पिछड़े। अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान प्रदेश जो है देश के सबसे नीचे के पायदान के 3 प्रदेशों में से है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कमोबेश यही हालात है। हम निरंतर विषय पर दृष्टि बनाए रखते हुए राज्यों के साथ में आग्रह कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की है, अधिकारियों के स्तर पर भी चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि अब इस काम की गति जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। Sir, in Andhra Pradesh, the coverage of households under drinking water has doubled. My question to Honorable Minister, sir, I think yes, sir, in some districts of Andhra Pradesh, the coverage has improved drastically, but it is still low. I would like to request the minister to focus on north coastal Andhra districts like Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram. So my question is whether there will be a special drive to improve coverage in north coastal Andhra districts. क्या आंध्र प्रदेश इज अमंग द स्टेट्स जहां पर परफॉर्मेंस बहुत लो है? मैं सदन के सामने अत्यंत दुख के साथ में कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 2021 के बाद में भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में जो एलोकेशन किया गया है, उस एलोकेशन में एक भी पैसा अभी विड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अभी जो है स्टेट शेयर जो उनको देना चाहिए वो 2021-22 का स्टेट शेयर भी नहीं दे पाए। निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है और हम निरंतर उनके संपर्क में रह करके उनको इस दिशा में प्रगति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बात कह रहे हैं। During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. CPIM MP Dr. John Brittas asked whether it is a fact that government has been encouraging private investment for developing greenfield airports. In his reply, Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia said the ministry has taken various steps to attract investments from private investors for development of airport infrastructure in the country, including greenfield airports. 100% FDI in greenfield and brownfield airport projects under the FDI policy has been permitted. BJP MP Kanta Kardam asked about the number of MSMEs being run by the women entrepreneurs in the state of Uttar Pradesh. In his reply, Micro, Small and Medium Enterprises Minister Narayan Rane said, as per the Udyam registration portal and the number of registrations of women-owned micro, small and medium enterprises in the state of Uttar Pradesh is 256,260. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Welcome back to House Highlights. As soon as the lower house met on Monday, opposition members started sloganeering. The Speaker, Om Birla, and the Parliamentary Affairs Minister, Prahlad Joshi, requested members to let the question hour function smoothly. सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है।
आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो उस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के उपनेता ने पूर्व में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है और हम अध्यक्ष पीठ से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा इससे मेरा आग्रह है ये चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? चलाएं। इसको एक्सप्लेन करना चाहिए सर। ये क्या चल रहा चर्चा है? होगी। जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी। इस तरह के पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट का बातचीत से ही सर मैं रिकॉर्ड समस्या का समाधान होगा। नॉर्थ ईस्ट के एमपी जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा से समाधान निकलेगा। The Speaker then asked Deputy Leader of the House, Defence Minister Rajnath Singh, to defend the government. Amid the din, Rajnath Singh said that the government was ready to discuss Manipur provided the House was allowed to function. हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। During the question hour, the first question on Monday related to environmental clearance to pending projects. A BJP member from Kannauj, Subrata Pathak, wanted to know from the Minister for Environment, Forest and Climate Change the details of pending projects, if any, for want of environmental clearance. Bhupendra Yadav, the Minister of Environment, Forest and Climate Change, replied. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं, और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? कुल मिलाकर के 153 परियोजनाएं लंबित हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका भी उत्तर इस विस्तार के साथ लिखित में दिया गया है। As per information available on Parivesh portal retrieved on 20th of July, there are a total of 153 proposals relating to the central state governments, UTs at various stages of consideration with the respective SEIAA as per provisions of the said notification. There are 3 such projects in Uttar Pradesh. Member Guman Singh Doma from Ratlam asked a question related to protection of tribal culture, traditions and customs, which was answered by Minister for Tribal Affairs Arjun Munda. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती है और जनजाति संस्कृति को नष्ट करती है, तो क्या सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर के धर्मांतरण को रोका जा सकता है, जनजाति संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जो जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके जो विशेष प्रावधान है उस संबंध में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद है जिसके माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राज्यों को इन सारे मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति परंपराएं बनी रहें। Shiv Sena MP Dhairyashil Mane asked an important question related to financial performance of public sector banks. He wanted to know what are the steps being taken to prevent banks in private as well as public sector from misbehaving with people who sometimes are unable to pay EMIs in time. In her reply, the Finance Minister Nirmala Sitharaman assured the House that banks have been instructed in this regard.
देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, EMI चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूतिपूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। MI चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks. Whether they are public sector banks or private sector banks, the government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. Question related to short-term training progress for women was asked by Godda MP Dr. Nishikant Dubey. He also proposed a committee to be made regarding the skilling of women. Dharmendra Pradhan, Minister for Skill Development and Entrepreneurship, apprised the House of the steps being taken in this regard. महिलाओं का प्रशिक्षण का जो रेशियो है आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में 34% कहा है और इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर से दिखाई दे रहा है कि NSDC है या अलग अलग मंत्रालय, 20 मंत्रालय हैं जो स्किलिंग का काम करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी शायद बनी है या नहीं बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है या मेरा सुझाव है या प्रश्न है कि जो NSDC है और जो सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का इरादा है, और यदि इरादा है तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भारत सरकार की क्या सोच है? शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34% है, लेकिन जिस ढंग से देश में कटिंग एज स्किल्स आ रहे हैं, न्यू एज स्किल्स आ रहे हैं, विशेष करके मैं उदाहरण देना चाहूँगा IT सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, डिजिटाइजेशन की नया दुनिया में महिलाओं की आवश्यकता उसमें और लगने वाला है। अभी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में सारे पैकेजिंग, असेंबलिंग के काम महिला करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार की स्किल डिपार्टमेंट की नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों की कोऑर्डिनेशन में इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। Dr. Umesh Yadav's question related to the Finance Ministry. He inquired on the steps being taken to simplify the income tax return procedure. Minister of State for Finance, Dr. Bhagwat Krishna Rao Karad answered. India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax moral? सरकार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। TDS सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया।
एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वो ITR सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। A question on current unemployment rate was asked to the Labour Minister Bhupendra Yadav by Deepak Baij. He wanted to know the current unemployment rate in the country, the rural and urban area-wise, and also the details of the states where unemployment rate has risen to more than 10%. In his written reply, the Labour Minister has given the details. In 2019-20, rural unemployment was 3.9%, urban unemployment was 6.9%, and total unemployment was 4.8%. In 2021, rural unemployment was 3.3%, urban unemployment was 6.7%, and total unemployment was 4.2%, while in 2021-22, rural unemployment reduced to 3.2%, urban unemployment came down to 6.3%, while total unemployment declined to 4.1%. The question hour could not be completed after several appeals from the chair as the opposition continued sloganeering and raising placards. The speaker adjourned the house till 12 noon. माननीय सदस्यगण, आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी से, तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन चले, आप अपनी बात रखें। मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपनी अपनी सीट पर जाए और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं 12 बजे बाद उस मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं सभी दलों से बात करके सहमति बनाकर इस मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हूं। आप नारेबाजी करेंगे, तख्तियां लाएंगे, इसीलिए आपने जनता को भेजा था। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। When the House reassembled at 12 noon, important papers were laid. The government withdrew the DNA Technology Use and Application Regulation Bill 2019. The government also introduced 3 bills, namely the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill 2023. After some important work, the House was again adjourned till 2 p.m. and then again till 2:30 p.m. At 2:30, when the House reassembled, Home Minister Amit Shah said the government was ready to discuss Manipur issue, but the opposition does not seem to be willing for a discussion. मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। As the House continued to be in disorder, the House was adjourned for the day. माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना
और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sansad Television. Good night.